Hello my dear students and welcome back to Balajee online classes. Today I Fezia Kadwa is here to illustrate chapter number 13 Time and Motion of class 7 Science. Now the very first thing that you should know before starting this chapter is that what is time, right? Time क्या होता है? So time is basically a gap between two events. दो events के बीच में जो gap होता है that is called as time, right? Also, we have a instrument that is clock. We have a device that basically measures time. Then we have the first topic of this chapter, that is the periodic events. Now, बहुत सारे events ऐसे होते हैं, they get repeated after a regular interval of time, and those events are called as periodic events. The events which get repeated after a regular interval of time. The coming of seasons, occurrence of day and night are basically the examples of periodic events. Then we have a device that was used in the ancient times basically to measure time. At that time, clock wasn't discovered. So people used to have different sort of devices basically to measure the time, to see that what time it is now. One such device we are going to study, and that is the sundial. Sundial क्या होती है? Primitive device थी that was basically used to measure time, and it is based on the fact that a shadow of an object changes its length and position with the position of the sun. कोई भी object है वो क्या करती है? वो अपनी length और position sun की position के according change करती है, right? So basically sundial में क्या होता था? It consists of a piece of metallic triangular plate that was fixed vertically on a circular board in such a way that the plate casts a shadow on the board, and the position of the shadow can be used basically to calculate the time, right? क्या होता था कि इसमें जो sundial होता था, इसमें एक ट्रायंगुलर मेटालिक प्लेट वर्टिकली फिक्स की जाती थी सर्कुलर बोर्ड पे. एक सर्कुलर, लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, एक सर्कुलर बोर्ड है और उसपे क्या है? वर्टिकली एक ट्रायंगुलर मेटल जो है प्लेट दैट हैज बीन फिक्स्ड, राइट? और वो इस तरह से फिक्स की जाती थी कि जो शेडो होती थी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वो कहाँ कास्ट होती थी? दैट वाज कास्टेड ऑन दी बोर्ड. जो मेटेलिक जो ट्रायंगल हमारी प्लेट है ट्रायंगुलर, उसकी जो शेडो दैट वाज कास्टेड ऑन दिस सर्कुलर बोर्ड, राइट? और इस तरह से क्या होता था, जो पोजीशन होती थी उस शेडो की, उसके हिसाब से दे यूज्ड टू मेजर द टाइम. Then apart from these sundial, there were many other devices like the candle clock, we have hourglasses, we have water clock, etc. These were some other devices that were also used by the people at that time basically to measure the time. Then we have the simple pendulum. Simple pendulum you all might have seen in case if you are having that sort of clock, you know, with that pendulum which rings after an hour, right? Maybe you have seen those types of clocks. So there you can see that एक pendulum सा होता है, attach होता है, जो to and fro movement करता है, right? So we are going to study about that only. एक जो small mass होता है that has been suspended from a fixed point and allowed to swing freely, ठीक है, it has been allowed to swing freely under the influence of gravity is called as pendulum. That is what pendulum is, right? एक simple pendulum में क्या होता है? एक simple pendulum में एक small metallic bob होता है, ठीक है, जो एक स्टैंड, एक रिजिड स्टैंड से अटैच होता है. एक हमारा स्टैंड हो गया, ठीक है, उससे हमारा ये बॉब जो है नीचे एक गोल गोल से एक बॉब होता है, मेटालिक बॉब, थोड़ा सा हेवी होता है, वो इससे अटैच होता है, ठीक है. और वो क्या होगा? उस पर एक थ्रेड लगा होगा, ठीक है. उस थ्रेड से एक रिजिड स्टैंड में जिसमें थ्रेड लगा है, उस थ्रेड से वो बॉल अटैच है और वो क्या कर रहा है? वो ऐसे फ्रीली जो है वो स्विंग कर रहा है, राइट? When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to the one side, it hastens to move to and fro. अब क्या हुआ? जैसे ये आपका सपोज करो, दिस इज द थ्रेड एंड दिस ब्लैक थिंग इज द बॉब. इमेजिन फॉर अ टाइम, राइट? ये जो हमारी ब्लैक चीज है, ये क्या है? ये बॉब है. अब इसको हम एक साइड पे बॉब को ले गए, ठीक है, एक साइड पे ले गए, उसके बाद इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा? ये ऐसे ऐसे करके ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा. तो ये मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं? टू एंड फ्रो मूवमेंट है, ठीक है, टू एंड फ्रो मूवमेंट. तो इस तरह से हमारा कुछ जो हमारा पेंडुलम होता है वो कुछ इस तरह से हमारा मूव करता है, राइट? और ये जो मूवमेंट होती है, द मूवमेंट ऑफ अ बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन एंड देन बैक टू इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑक्सिलेटरी मोशन. तो ये बेसिकली, और एक ऑक्सिलेशन कब कंप्लीट होता है? जब एक जो हमारा बॉब है वो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाता है और एक्सट्रीम से वापस मीन पे आ जाता है,
ठीक है, तो क्या कहते हैं उसे कहते हैं एक complete oscillation. Then we have some important terms that are related to simple pendulum, and first one is the oscillation. One complete back and forth movement of a pendulum from mean position to extreme position and then coming back to the mean position again is the one oscillation. ये होता है एक oscillation. Then the second is the effective length. The length of the string from the point of contact to the center of the bob is called as effective length. Then we have the amplitude. The distance between the mean and extreme position. जो mean और extreme position के बीच में जो distance होता है, ठीक है, this is the mean position and this is the extreme position. इनके बीच में जो distance है, right? That distance is what? That distance is the amplitude. ठीक है. Then we have the frequency. The number of complete oscillation that is made in 1 second is called its frequency. Then the time period, basically time period is the time taken for one complete oscillation is said to be the time period. Then we have certain factors that basically affect the time period of a pendulum. First is the time period does not depend on the amplitude. Amplitude पे time period depend नहीं करता है. Also time period does not depend on the mass of the bob. जो mass होता है bob का उस पर भी depend नहीं करता है. Then time period depends on the length of the string. But time period जो होता है that depends on the length of this string in which the bob is attached. Then we have the another topic that is the slow and fast motion. What happens, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होती है उसका जो मोशन होता है वो स्लो भी हो सकता है, वो फास्ट भी हो सकता है, राइट? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ गिवन डिस्टेंस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम देन इट इज सेड दैट दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट. And if the same distance is covered by an object in more time, then we can say that this object is now slow. The motion of this object is slow. तो इस तरह से क्या होता है, different type के motions होते हैं. For example, अगर कोई कार है that is moving in a traffic, तो क्या हो रहा है, वो अपनी स्पीड स्लो भी कर रही है, फिर अपनी स्पीड फास्ट भी कर रही है, ठीक है. तो क्या हो रहा है, एक टाइम पे जब स्लो कर रही है तो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और जब वो तेज चल रही है तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, राइट? तो ये डिफरेंस होता है. देन वी हैव द स्पीड. The speed of an object is defined as the distance covered by the body in a unit time. The formula of the speed is equals to distance covered by a body upon time taken to cover the distance. And the unit of the speed is meter per second, but it can also be expressed in other units like meter per minute and kilometer per hour. Then we have two types of speeds. First is the uniform speed and second is the variable speed. Uniform speed क्या होती है? Body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time. तो कोई भी बॉडी को हम कह सकते हैं कि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है तब जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है. फॉर एग्जांपल वी हैव अ मूविंग कॉर्ड दैट इज मूविंग ऑन अ हाईवे. देन वी हैव वेरिएबल स्पीड. वेरिएबल क्या होता है? बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स unequal distance in equal interval of time or equal distances in unequal interval of time. In both the cases, the speed is said to be variable. For example, we have a car which is moving in a heavy traffic. Then we usually, you might have seen in your car, in case if you have a drive on a car, then you might have seen that there is a dashboard, right? And that dashboard we have two different kinds of meters. First is your speedometer. Speedometer is basically which records the speed. And second meter is called as odometer. Odometer, what is the work of odometer? Odometer basically measures the distance which is covered by the vehicle. ठीक है, वो distance measure करता है and the other meter measures the speed. So class, the chapter ends here with this topic. Now please read this chapter thoroughly, understand all the technical terms. You have to learn all the difficult words. Also, you can get the notes of this chapter through School Mitra app. So please download those PDFs and complete your work. Thank you and have a nice day.